Jai Hind students, welcome to online class of Shriram Public School. Myself Shweta Shrivastava, your maths teacher. In the previous class, I was explained property and definitions of fractions. Now today, we start exercise 2a. Question first, compare the fraction. For comparison, we use cross multiplication like 5 upon 8. Exercise 2a. Question first part 5 upon 8 and 7 upon 12. Clear? Now compare the fraction. Compare it. For comparison, we do the cross multiplication 5 upon 8, 7 upon 12. We do the cross multiplication. Now 12 5s are 60, 8 7s are 56. Clear? 8 7s are 56, 12 5s are 60. 60 because 60 is greater than 5 upon 8 is greater than 7 upon 12. Clear? Because 60 is greater than 56, then 5 upon 8 is also greater than 7 upon 12. Now student, second and third part solve yourself. Now move on the question second. Clear? For comparison, for comparing only two fraction, only do the cross multiply. Clear? हम क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? नाउ क्वेश्चन सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. फॉर असेंडिंग ऑर्डर it means increasing order. Increasing it means smaller to greater. Clear? So now student, here is more than two fraction. So first, for more than two fraction, first of all we take the LCM and after then we make the equal denominator. Like question second, 3 upon 4, 5 upon 6, 7 upon 9, 11 upon 12. 3 upon 4, 5 upon 6, 7 upon 9, 11 upon 12. Clear? Now first of all find the LCM of 4, 6, 9 and 12. Take the LCM. Start from 2. 2 2s are 4, 2 3s are 6. It's not divisible. Direct 2 6 are 12. Again 2 1s are 2, 3 as it is, 9 as it is, 2 3s are 6. Again 3 1, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Again 3, it's 1 1 1 1. So now for LCM, 2 into 2 into 3 into 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. Clear? 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. So now student, LCM is 36. LCM is 36. So now we make the all denominator 36. Clear? LCM equals to 36. LCM, otherwise you write LCM of 4, 6, 9 and 12 equals to 36. So now we make the all denominator 36. Now 3 by 4 multiply by, now डिनोमिनेटर की नंबर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. एक एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उससे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक 4 9s are 36 एंड मल्टीप्लाई बाई 9 by 9. अगेन 6 6s are 36. इट मीन्स 5 by 6 मल्टीप्लाई बाई 6 by 6. 7 upon 9, 9 4s are 36. It means multiply by 4 by 4. 12 3s are 36. It means 11 upon 12 multiply by 3 by 3. Clear? 9 3s are 27 upon 36. 27 upon 36. 5 6s are 30 upon 36.
3 9 are 27, 4 9 are 36, 5 6 are 30, 6 6 are 36. Again 7 4 are 28 upon 36. 11 3 are 33 upon 36. Now look here, all denominator is same, all denominator is 36. Now comparison is easy. Look here, here is more than two fractions, but the all fraction denominator is same. So now find out the smaller numerator. Small numerator is the 27. So now write it, 27 upon 36. Next, after then 28 upon 36. Next 30 upon 36, and last 33 upon 36. Clear? Now in the last step we write the correct fraction. 27 upon 36 is the fraction of 3 by 4. 28 upon 36 is the fraction of 7 upon 9. Again 30 upon 36, it's 5 upon 6. And 33 upon 36 is 11 upon 12. Clear? So now 3 by 4 is smaller and 11 upon 12 is greater. Now if we use which sign? We use a less than sign, because smaller to greater, 11 upon 12 is greater. Clear? And the smallest fraction is 3 by 4. Clear? So now student, follow the same process and complete each part of question second also. Now question third, arrange the following in descending order. तो now student follow the same process. Clear? जैसे हमने अभी बताया आपको सेम डिनोमिनेटर करना, वैसे ही वी मेक द सेम डिनोमिनेटर and arrange descending order. It means decreasing order. Descending order, decreasing order, greater to smaller. Clear? Descending order, decreasing order, greater to smaller. It means बड़े से छोटे क्रम में. Clear? तो first of all we take the LCM. LCM लेंगे. After then we make the same denominator. Before few second I was explain. अभी हमने बताया आपको कैसे हम सेम डिनोमिनेटर करेंगे, और सेम डिनोमिनेटर करने के बाद आफ्टर असेंडिंग बनाना होगा तो हम असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे, डिसेंडिंग बनाना होगा तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे. क्लियर? तो नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो सॉल्व योर सेल्फ. क्वेश्चन 4, Renu got 2 by 7 part of an apple. Renu got 2 by 7 part of an apple, while Sonal got 4 by 5 part of it. Who got the larger part and by how much? रीनू ने 2 by 7 पार्ट ऑफ एप्पल का लिया और सोनल ने 4 by 5 पार्ट लिया. किसने एप्पल का एबव पार्ट लिया, मोर पार्ट लिया, और कितना अधिक पार्ट लिया? उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली टू फ्रैक्शंस की बात की गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और आफ्टर देन फॉर हाउ मच वी सब्ट्रैक्ट स्मॉल फ्रैक्शन टू ग्रेटर फ्रैक्शन. ग्रेटर फ्रैक्शन से स्मॉल फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वी सब्ट्रैक्ट स्मॉल फ्रैक्शन फ्रॉम ग्रेटर फ्रैक्शन. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. Renu part is 2 by 7 and Sonal is 4 by 5. Clear? 2 by 7 and 4 by 5. Now compare it. 2 by 7 part, 4 by 5 part. So now 2 by 7, 4 by 5, compare it, do the cross multiplication. 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 by 7 and 4 by 5, 2 5s are 10 and 7 4s are 28. 2 5s are 10, 7 4s are 28, because 28 is greater,
then 4 by 5 is also greater. It means 2 by 7 is less than 4 by 5. I repeat again, we do the क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 7 4 ज़ा 28. अब यहाँ क्या हो गया, 28 इज़ ग्रेटर, बिकॉज 28 इज़ ग्रेटर, राइट साइड वैल्यू इज़ ग्रेटर, इट मीन्स 4 बाई 5 इज़ ऑल्सो ग्रेटर. अब क्या हो गया, हमारा 4 बाई 5 ग्रेटर हो गया और 2 बाई 7 हमारा क्या हो गया, स्मॉल हो गया. 2 बाई 7 इज़ लेस देन 4 बाई 5. क्लियर. नाउ हाउ मच, अब कौन हु ग्रेटर, 4 बाई 5, इट मीन्स फर्स्ट आंसर इज सोनल पार्ट. किसका पार्ट ग्रेटर है, सोनल का. एंड हाउ मच के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बाई 5 ग्रेटर है तो 4 बाई 5 माइनस 2 बाई 7. टेक द एलसीएम, 5 एंड 7 का एलसीएम लिया 35, 5 7 जा 35 एंड 7 मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर, 7 इंटू 4, अगेन 7 5 जा 35, 5 इंटू 2. डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आती है उससे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं. 5 7 जा 35, 7 इंटू 4, 7 5 जा 35, 5 इंटू 2. अब नाउ 28 माइनस 10 अपॉन 35, 25 माइनस 28, 28 माइनस 10 अपॉन 35, 28 माइनस 10 इज़ 18, 18 upon 35. How much greater? 18 by 35. 28 minus 10 is 18 and denominator 35, 18 upon 35. Clear? So now student, complete it. And question 5th, find the sum. If numerator same, denominator same, direct write the, add the numerator and write the common denominator. If denominator same, write the common denominator. common denominator क्या है हमारा, 9. common denominator 9 है. and add the numerator 5 plus 3, it means 8 upon 9. I repeat again, if denominator same, write the common denominator and add only numerator 5 plus 3, 5 plus 3, 8 upon 9. Now if suppose denominator not same, denominator is different, सेम नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट. अब 5th पार्ट में आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो जाएंगे. सपोज मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हों एंड denominator is different. If question is mixed fraction and denominator is different, now start. Fifth part, 3 whole 4 by 5 plus 2 whole 3 by 10 plus 1 whole 1 by 5. I repeat again, 3 whole 4 by 5, 2 whole 3 by 10, 1 whole 1 by 15 है, 1 whole 1 by 15. First of all solve the mixed fraction. 5 3s are 15 and 4 19, 19 upon 5. 5 3s are 15 and 4 19, 19 upon 5. 10 2s are 20 and 3 23 upon 10. 15 1 जा 15 and 1 16 upon 15. Clear? Now take the LCM. LCM of 5 10 15. अब हम 5 10 15 का LCM निकालेंगे. 5 10 15 2 से करेंगे. 2 5 जा 10, it's 15. 5 not divisible, 15 not divisible, 2 5 are 10. Again 5 3 3 5 not divisible, 5 also not, 3 5 are 15, 5 1 1. So now 2 3 are 6, 6 5 are 30. 2 से डिवाइड किया, here is 5, 2 5 are 10, 15 as it is, 3 5 not divisible as it is, 5 again not divisible as it is, 3 5 are 15, again 5 1 are 5, 5 1 are 5, 2 3 are 6, 6 5 are 32 into 3 into 5,
2 3 is 6, 6 5 is 30. LCM is 30. So now LCM is 30. 5 6 is 30. 6 into 19. 10 3 is 30. 3 into 23 plus 15 2 is 30. 2 into 16. I repeat again. डिनोमिनेटर की वैल्यू से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उससे जस्ट न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक 5 6 ज़ा 30 एंड 6 इंटू 19. 10 3 ज़ा 30. 3 इंटू 23 एंड 15 2 ज़ा 30. 2 इंटू 16. नाउ 19 6 ज़ा 114. 23 3 is 69. 16 2 is 32 by 30. Clear? After then add the all values and divide by 30. Clear? सैलरी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर? तो नाउ स्टूडेंट कंप्लीट ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 to 5th. When you have doubt, ask in evening class. Clear everyone? Try to solve. Thanks, student. Class is over.